Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope everyone are fine and healthy inshallah with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Then we had finished alhamdulillah many lessons of Tajweed. Until now we had finished first of all about Tajweed, what it is actually and what is this subject relates to and why do we have to learn Tajweed. We had studied about this too, and we had studied like for Tajweed, we need to learn first of all the pronunciation and the characteristics of the letters to pronounce them properly. There are a few basic rules also, because if we miss those basic things of Tajweed, it may lead to doing mistakes in the Quran, which like for mistakes also we had studied that there are different types of mistakes, lahan jali and lahan khafi. Lahan jali means the mistake which are totally visible. They can, even the normal person can identify those mistakes and it may lead to change of meaning of those words. So we need to be careful here. So we had learned alhamdulillah makharij lesson. We had learned the rules of noon sakinah and tanween, mim sakinah and tanween, mim sakinah, and we had learned al mudud. Alhamdulillah, we had finished many lessons. So now we are going to the next lesson, Sifaat al-Huroof. Sifaat means characteristics. Characteristics means, for example, there are three brothers and sisters. All are, Alhamdulillah, of course, in the same home and they are with their parents. But their names will be different, their characteristics will be different. They are coming from the same home, but their qualities are different, their behavior is different, their names are different. So there are certain characteristics, right, through which we can identify them. Same like that for huruf also, for the letters also, we have different characteristics, because there are few makharij from where one or more than one harf we pronounce. For example, from wasat al-lisan, from middle of the tongue, Jim, Sheen, Ya, غير مادية. All those three letters we pronounce from Wasat al-Lisan. But how actually we pronounce them differently? Because we have different characteristics of these letters. So for this purpose, we need to learn Sifat al-Huruf. तो हम लोग सिफात al-Huruf किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि हमें हरूफ को डिफरेंशिएट करना मालूम होना है. मतलब अब कई ऐसे हरूफ हैं जो एक ही जगह से निकलते हैं. मतलब जैसे वसत लिसान, हम मैंने अभी बोला है कि वसत लिसान यहाँ पे 3 लेटर्स निकलते हैं, जीम, शीन और या गैर मद्दिया. लेकिन हम इन तीनों को क्यों अलग अलग किस तरह पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये जीम है, ये शीन है, ये या गैर मद्दिया है, किस तरह पता चलता है हमें? क्योंकि हमें उन हरूफ का के जो सिफात हैं उसके बारे में हमें पता है, तो इसलिए हम उसे अलग अलग कर पाते हैं. क्योंकि जैसे एक घर से ही अब 3 बहन भाई एग्जाम्पल हैं, तो एक घर से ही वो लोग निकलते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि ये फला है, ये फला है, ये फला है? क्योंकि हमें उनके नामों के बारे में मालूम है, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके तो वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या है, उनके बारे में कुछ पता होता है हमें. तो उस वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये फला शख्स है, ये फला शख्स है. इसी तरह हमें हरूफ को भी सिफात के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये हर्फ कैसे पढ़ते हैं और यहाँ ये हर्फ कहाँ से पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल दाल, व, था, ये तीनों में हम जबान को थोड़ा सा निकाल के पढ़ते हैं. These 3 letters we pronounce them with tip of the tongue little bit out. But how do we know that this is different from that? We know that dal is different from wa. How? Because there is certain characteristics. क्योंकि कुछ सिफात हैं, ये दोनों को डिफरेंशिएट, मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं. तो वही चीज हम पढ़ेंगे सिफात. व्हाट आर द सिफात अल हुरूफ?
So here, what are the qualities, characteristics? What are sifat? The ways through which a letter is pronounced are called qualities or sifat. तो हम एक हर्फ को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसे हम क्वालिटीज कहेंगे, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, या तो सिफात कहेंगे. सो द वे इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक और सिफात. So we should know that way how to pronounce that letter. And sifat are of two types. There are two types of qualities. There are two types of sifat, permanent and temporary. So sifat दो टाइप के हैं हमें, जिसमें सिफात लाजिमा कहते हैं और सिफात आरिदा. सिफात लाजिमा मतलब which are permanent in those particular letters. That quality won't leave that letter however it is, whether it is with fatha, kasra, sukun, dhamma, however is the condition, that sifa, that quality will be with that letter always. But there are few sifat which is known as which are known as sifat arida. They are in certain condition of those letter, and in certain condition they leave that letter. So inshallah we'll study about this sifat arida in further sessions. So we'll start with sifat lazima. What are those sifat lazima? Sifat lazima means, as I said, those qualities won't leave the letter anyhow. So first of these sifat is, first of all, this sifat al-huruf, what are the benefits? अब ये सिफात al-huruf हम पढ़ रहे हैं ना, ये लेसन का क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, इतने तो हम लोग पढ़ लिए लेसन, मखारिज पढ़ लिए, नून साकिना पढ़ लिए, मीम साकिना पढ़े, अब ये फिर क्यों? You're getting in your mind, right, that we had already studied basics of Tajweed, where we have to do mad, where we have to do onna, and this minimal things we had studied. So why do we need to study this complicated lesson, right? So first of all, the first benefit is to differentiate between the common letters in the makhraj, because as I said in the beginning of this session, that there are certain letters which are pronounced from one makhraj. For example, as I said, wasat al-lisan, or for dal, wa, and tha, we pronounce these three letters in one place. So we should know the sifat of these three letters to pronounce them differently. तो इसलिए हम लोगों को सिफात पढ़ना चाहिए, ताकि हम एक मखरज से निकलने वाले कई हरूफ को अलग अलग को पहचान सकें कि ये दाल है, ये वा है, ये ता है. तो ये मेन बेनिफिट है, ये मेन फायदा है सिफातुल हरूफ को पढ़ने का. दूसरी चीज ये है कि टू ब्यूटिफाई द रेसिटेशन एंड द प्रोनाउंसिएशन, ताकि हम इस रेसिटेशन को अच्छे से खूबसूरत से बनाए हमारे रेसिटेशन. क्योंकि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान में यह है ना आयत कि हमको कुरान को बेहतरीन आवाज में पढ़ना है. जितना बेहतर हो सके आपसे, आप कोशिश करते रहो. वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर. तो कुरान को अल्लाह इतना आसान बनाया है. अल्लाह हमें पूछ रहा है कि कोई है जो इसको बार बार पढ़े, बार बार रिपीटेडली पढ़े. लेकिन हम लोग इसको डिफिकल्ट समझते हैं कि ये कौन पढ़े, इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इतने कॉम्प्लिकेटेड. अगर हम जानेंगे नहीं कैसे पढ़ना, किधर पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे कैसे सही से? तो इसलिए हम लोग को अपने रेसिटेशन को ठीक से पढ़ने हैं और उसको बेहतर से बेहतर बनाने हैं, और उसको खूबसूरत आवाज में पढ़ने के लिए हमें ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिफात अल हुरूफ पढ़ना है. अब फॉर एग्जाम्पल सीन और सौद है हमारे पास. अब सीन भी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं आप, सौद भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कहाँ की खूबसूरती आएगी क़िराअत में? बिल्कुल सब चीज़ एक जैसे पढ़ रहे हैं आप. तो खूबसूरत बनने के लिए हमें हर एक चीज़ को एक अनोखे अंदाज में पढ़ना है, और वो अनोखा अंदाज ऑलरेडी हमें बताया जा चुका है. तो बस उसको पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है. और जो थर्ड बेनिफिट है, थर्ड benefit of the Sifat al-Huruf is to recognize the strong letters and the weak letters. So the second benefit was to beautify, means وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, as I had said in
Urdu explanation that the Quran has made easy. Just Allah is asking us to repeat our recitation, to come to this Quran repeatedly and to learn it, to recite it repeatedly. But we make it difficult. We think it is difficult. The problem is we think negatively. We should be so positive, right? We think that it's so hard. It is not our cup of tea. Like it is not our mother tongue. It is so hard. No, all those things, it doesn't matter, because already Allah has said in the Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And so it is so, everything has been explained, everything has been uh, made so easy. We just have to give our time to learn. So one of the benefits of Sifaat al-Huroof is to beautify our recitation and the pronunciation. So if everything, all the letters we read same, and all everywhere we're reading with same tone, so how can we beautify our recitation? We should different. For example, Seen and Saad. Wherever there is Seen, you're reading okay Sa only, and wherever there is Saad also you're reading Sa only, not Saw, because we know that it is a tafkhim letter. So we should know the sifat of each harf to beautify our recitation, to make it so beautiful in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we will be gaining more and more rewards from Allah. And the third is to recognize. So there are few letters, strong letters, there are few weak letters. So for that also we should know the sifat al-huruf, to know which are strong letters, which are weak letters in the according to the qualities of those letters. Next we'll have letters which, like as I had said, Sifat Lazima and Sifat Arida. So inshallah first we'll be learning about Sifat Arida only. Sifat Lazima, permanent Sifat, permanent qualities. But in permanent qualities also we have opposite Sifat, means there are 5 pairs of Sifat, 5 pairs of qualities which have opposites. Like for example, we have Al-Hams, and the opposite is Al-Jahr. So there are 10 qualities, or we can say 5 qualities with their pairs. So in permanent qualities, Sifat Lazima, we have 2 types. Again, we can say that one of the type is that few Sifats are having Did. Did means opposites. And the other type is without opposites, without Did. Sifat laysa laha Did. तो हम लोगों को सिफात, मैंने जैसे पहले मैं आपको कहा कि सिफात के 2 टाइप हैं. एक जो परमानेंट है, मतलब हमेशा रहते हैं वो हरूफ के साथ, और एक सिफात आरिदा. अब हम सिफात आरिदा को नहीं पढ़ रहे, सिफात लाजिमा जो है उसी को पढ़ रहे हैं. लेकिन अब सिफात लाजिमा में भी 2 टाइप हैं. एक ये टाइप के जिसके ऑपोजिट्स हैं, मतलब हमारे पास 5 पेयर्स हैं, 5 सिफात हैं जिसके ऑपोजिट भी है, मतलब टोटल 10 सिफात हैं. और दूसरा टाइप ये है कि ऐसे क्वालिटी जिसके ऑपोजिट्स नहीं है. सो सच सिफात आर 7 सिफात. तो ऐसे सिफात 7 हैं. So in permanent sifat we can say that total 17 sifat are there. तो टोटल सिफात लाजिमा 17 है. 10 जिसके ऑपोजिट्स एक दूसरे के साथ हैं, और 7 ऐसे हैं जिसके कोई ऑपोजिट्स नहीं है. तो फर्स्ट, so we'll start with सिफात अल्लती लहा दिद, मतलब ऐसा सिफात जिसके ऑपोजिट्स हैं. So we'll start with hams. The opposite to hams is jahr. Al-hams. Al-hams means concealment. Concealment means to continue the, or we can see that to continue something. So technically we can see in the context of Tajweed, the continuation of the breath
breath when pronouncing the letter due to weakness in its origin, causing weakness in its reliance on its makhraj. So alhams means when we pronounce that sound, our breath will be stopped. Our breath will be like we won't be breathing it. We won't be breathing while pronouncing this letter. मतलब अगर हम ये हर्फ को पढ़ेंगे तो हमारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, मतलब हमारी सांस कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल अफ अफ मतलब रुक जा रही है, हम लोग थोड़े कंटिन्यू नहीं कर रहे. जैसे दूसरे फॉर एग्जाम्पल दूसरी कोई हर्फ है, जैसे कि कॉफ रख लो, आक आक, मतलब एकदम से सांस आकर रुक जाती है. तो मतलब हमारे पे अलहम्स मतलब कंटिन्यू होना है, ब्रीथ मतलब हमारी सांस थोड़ा सा एकदम से रुकना नहीं है. जैसे अफ आह, आपकी सांस जारी रहता है ना, जारी रहती है ना, तो उस इस तरीके से मतलब your sound should continue like af ah. You should not stop like this abruptly. For example, in qaf, you're stopping. Even if you try, you cannot like this. You cannot actually. In like for example, in af, how your sound was going on, but in qaf, it was not like that. So in hums, our general meaning, our sound will continue, but in jahr, our sound will be discontinued. So literally, jahr means to be apparent. Technically, it means the discontinuation of the breath when pronouncing the letter due to strength in its origin, causing it to rely greatly on its makhraj. So in jahr, we deeply concentrate on the makhraj. We don't, our sound will not continue. But there are a few letters in which the hums will be there, and there are few letters in which jahr will be there. तो कुछ letters हैं जो hums के हैं और कुछ letters हैं जो जहर के हैं. और फॉर एग्जाम्पल सूरत शरह में जैसे अलम नशरह लक सदरक, यहाँ पे मैं आप लोगों को अक इस तरह पढ़ो बोलती हूँ ना, सदरक ऐसे साउंड लाओ बोलती हूँ, तो ये साउंड क्या था. इन सूरत शरह आई यूज्ड टू से राइट, read this kaf with this sound sadarak like this. Why I used to say this because it is one of the letters of hams. Ak, like this it should be ak. It is wrong. Ak, the sound should come. So there are two letters of hams which are in a group of in a phrase. You can read this as فحسه شخص سكت. فحسه شخص سكت. तो हम्स के कुछ हरूफ हैं जो खासकर जब सुकून के साथ हो, मतलब जब साकिन हो, तब ये हम्स का साउंड बहुत क्लियरली सुनाई देता है. और ये हम्स की जो सिफत है वो क्लियरली विजिबल होता है. साउंड नहीं, हम्स का साउंड नहीं, जो सिफत है, ये जो क्वालिटी है, ये क्लियरली दिखता है हमें जब ये लेटर्स साकिन होते हैं. तो इसलिए खासकर काफ और ता में जब सुकून रहता है तो मैं बोलती हूँ कि अच अच इस तरह पढ़ो, क्योंकि एकदम से सांस को रुकना नहीं है, कंटिन्यू होना है. ये हम्स के हरूफ है. तो ये हरूफ एक फ्रेज में है जिसे हम पढ़ते हैं फहस्सहु शख्सुन सकत. So what are the letters of hams? Fa, ha, sa, ha, sheen, kha, sad, sin, kaf, ta. तो ये letters हैं hums के. So these are the letters of hums. And the sifa of hums, the quality of hums is visible, especially when they are sakin, when they are with sukoon. Generally, this sifat is always with them whenever they are with fatha, kasra, or dhamma, but they are more visible, more clear when they are with sukoon. That's why whenever there is kaf sukoon, I used to say sadrak, read like this, ak, at, like this. Okay, so after taking out these letters, whatever letters are left, those are the letters of jahr. अब ये लेटर्स निकालने के बाद हम्स के फहस्सहु शख्सुन सकत, ये लेटर्स जो हैं
निकालने के बाद जो कोई भी लेटर्स बचते हैं वो सारे लेटर्स जहर के हैं, मतलब हम लोगों को इसे आवाज नहीं आना है। जैसे मैंने कहा इस तरीके से, मतलब आवाज को जारी रखकर नहीं पढ़ना, एकदम से रुक कर पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो गया सिफत का। सेकंड पेयर अब हम पढ़ेंगे अल इनफिताह अल इत्बाक। सेकंड पेयर ये जो है इनफिताह और इत्बाक। इत्बाक मतलब कोई चीज को एक दूसरे को लगा देना, एडहेशन। इत्बाक मीन्स किसी चीज को इत्बाक मीन्स टू stick something together. Technically, it means the adhesion of the tongue to the roof of the mouth while pronouncing a letter. So here, what we are doing, what we are sticking together, what we are joining together, we are here it means adhesion of the tongue. So we are touching this tongue to the roof of the mouth, uh, the roof inside your mouth. We are sticking that part of the tongue to there while pronouncing those letters of itbaq. So the letters of itbaq are only four: sad, dad, ta, and dha. These four letters only are letters of itbaq. As, ad, at, av. So if you pronounce these letters, you will notice that we are touching this, we are pressing or we are sticking our tongue to the roof of the mouth. तो इत्बाक में क्या है, कोई चीज को चिपकाना, कोई चीज को लगा कर रखना, इस तरह को हम इत्बाक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम अपने जबान को, जीभ को मुंह के ऊपर का हिस्सा जो है, मतलब अब जो जिसे तालू कहते हैं वहां तो वो तो बहुत अंदर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ ऊपर का हिस्सा जो है जबान के एकदम ऊपर का, जबान के बीच का भी थोड़ा सा ऊपर, वहां पे हम अपने जबान को लगाकर पढ़ते हैं इत्बाक के लेटर्स। और ये इत्बाक के 4 लेटर्स है, मतलब ये सिर्फ 4 लेटर्स में हम इस तरह करते हैं। अस, अब, अब, ये 4 लेटर्स को पढ़ते वक्त हम इत्बाक के साथ पढ़ते हैं, मतलब रूफ ऑफ द माउथ जो है उसमें हम अपने जीभ को, जबान को लगाकर पढ़ते हैं। अब बाकी सारे जो लेटर्स बचते हैं उसमें इनफिताह मतलब खुलकर पढ़ना। Technically, it means keeping the tongue separated from the roof of the mouth while pronouncing a letter. इनफिताह मतलब हम जबान को जो मुंह के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे लगाकर नहीं पढ़ेंगे। इनफिताह मतलब खुला होगा जब भी दूसरे लेटर्स पढ़ेंगे, जैसे एस और कर रहे हैं हम, एस सीन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जबान आकर वो ऊपर माउथ के जो मुंह के अंदर का हिस्सा है, ऊपर का जो वॉल है, जिसे दीवार है, ऊपर सीलिंग है, जो भी कहेंगे आप, वहां पे नहीं लगता है, हमारी जबान जो है नहीं लगती है। तो इस तरह पढ़ना है, इसको इनफिताह कहते हैं, मतलब खुलकर पढ़ना है, अलग लगाना नहीं है। All letters besides the letters of itbaq contain the quality of infitah. So whichever letters are left after taking out sad, dad, ta, dha, those are the letters of infitah. So today we'll stop with these 2 pairs only. Inshallah, you'll get the notes. Barakallahu feekum. I hope it was beneficial session. And if any doubts or queries regarding this Sifaat, regarding these 2 sessions, we had studied 2 pairs of Sifaat Lazimah today. Sifaat Lazimah allati laha did means permanent Sifaat which have opposites. So 2 pairs which we had studied are al-infitah and itbaq. Itbaq means to stick together, or you can say to adhesion. Then the opposite of itbaq was infitah. Then second pair which we had studied today is al-hams. Opposite to it is al-jahr. And the letters of hams were فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. Opposite of that hams is jahr, and the letters of jahr are remaining letters.